Today we are going to talk about another chapter, chapter number 10, and it's all about maps. So, vocabulary for map is different from other maps, what we have already studied them. In fact, maps clear task ask students to compare two versions of geographical area. What type of areas? Let me explain it a bit. They could be two versions. It can be either past and present. Now, what I mean by past, for example, you have any of the map uh, about, for example, from 2000. And now you need to compare that map with the present time 2026, or I can write now. Number one. So now tenses we need to use. So one of the map we use past tense. And for the other one, that would be present. So that would be the combination of two tenses, past and present. And another scenario, you can have, for example, a map from now and future. So if there is a map from now and future, it can be, for example, now 2026, and another map you may have 2050. So in this case, we use present and future tense. This can be scenario. Exactly the same time, we will use both active as well as passive. So both tenses, clear, active, and passive, both can be used. Okay. Now, over here, as I talked clear, so usually the same location in two different time periods, as I mentioned earlier. So the key language focus is on change verbs, location verbs or location vocabulary, and clear, there could be prepositions. So we will study all of them, verbs, locations, and prepositions, all these three. So what can be the essential vocabulary for map? So we want to talk about the first one, Claire. Keep in your mind that yesterday, the one we talked about the process diagram. So the vocabulary we studied that was completely different. But now when we talk about the maps, so vocabulary really matters. In maps task, students do not usually need numbers. We don't need numbers. We don't write about increases, clear or decreases. Instead, they need precise vocabulary for position, movement, change, comparison, and strong candidate avoid repeating very simple language. They don't use very simple language such as there is, it changed, or it became bigger. Can you see? Now it's quite basic language. You won't achieve more than 6 or 5.5 for this. Now, instead of that, what we can do for higher band answers, use more accurate phrases such as was relocated to the western side. We'll study that. Underwent significant redevelopment, remained largely unchanged. This is how, like, for achieving higher band, you can use this vocabulary. The first part, position and location for prepositions, what we can use. This is basic place prepositions. And what are these basic place prepositions? And, on, it, near, beside, between, behind, opposite, next to. And if you understand this one, it will also help you in IELTS listening, map type of questions. You will have type of questions, map, and IELTS listening, clear?
if you understand this language, that can also really help you. For example, this is an example. The school is located to the southwest of the town center. Now, to, we have used what? Preposition to. So you can use any of the prepositions and it's quite easy. You understand how to use them. Then you need what? Directional position. For example, let me draw. This is suppose my map. You do understand this is your west side, this is east, this is north, and this is south. And these corners, we call them southeast, southwest, northwest, and then we can have northeast. For example, if something, before we had a school here, and the school was clear on the northwest corner, but now it has been relocated, and we have relocated towards east. Can you see? This is the east. This is the language we will need there, inshallah. And that's why, like, directional position is very important. In the north, in the south, on the eastern side, at the northern end, clear? So this is the vocabulary. Like a new shopping center was built on the eastern side of the town. So you need, clear? You do need directional position. And this is how, like, you need to understand. Then we it comes about relative positions. So relative position means you can say to the left of clear school, to the right of park. So different words you people can use in that case. And it comes about central position, in the center of, in the middle, clear. And if there is any on the boundaries, you can say on the edge of, clear, along the boundary of, at the corner. So the park lies at the southern corner of the site. This is the language you will really need it, and one by one we are going to elaborate in detail. As I told you earlier, direction vocabulary is very important. So you do understand, Claire, some of the phrases you can use, north, south, east, west. Later on, we will need it. If you just focus on the example, the university remained in the north. Look, for example, this is previous map and this is another map. We had university here and exactly the same, no change. And both are towards north side. This is your north. This is your north. Both are on north. So what we want to say, the university remained at the north, clear, north of the town. This is a town, both are town. This is like, for example, in the past, but now it's in present time. So what we want to talk about, we say that the university remained in the north of the town. So before and after, we can say northeast, as I mentioned earlier, these corners. Clear? You need to know about names for these corners. New housing was added in the, for example, this is my previous, this is for 2020, and this is for 2026, for example. And we want to add something here, where? In the southeast. This is southeast. And there are some of the housing society I included here in this position. Before here, we didn't have any housing society, but now we have added it. Not northern part clear, and then we can say southern section, different words you can use and how to use in, like, can you see the vocabulary part? So it's quite easy, and I'm sure like you people understand how to use that. Then it comes about possession verbs. Possession verbs are important. And all of them, if you just focus them, clear. So all of them, they are used, they are possession verbs. For example, we can say is located, is situated, lies, stands, runs through, extends along. So these are all of them, they are possession verbs. These verbs describe where something is rather than how it changed. These verbs talks about what? Where something is. For example, if there is library, clear? So the library is located in the center of the site, where something is. We don't want to talk about when you want to use these verbs, clear? So they don't talk about the changes. They want to talk about the exact position, the exact place, the location for things. So if you just focus these example, the station is situated. Can you see? So it doesn't talk about the changes. It talks about the exact location where something is. And the park lies on. A hall of residence stands. River runs. The main road extends. So can you see? No changes. Exactly the same. So this vocabulary position is important for you to
understand and learn them. Then words for, we need some of the words for expansion and growth. Now, look, in a map, if there are two maps, so we need, for example, this is one of my map and this is another map. Before we had a park here, suppose this is a park, northern boundary, clear? So we had a park and it's a small park. It's a small park. And now this park, clear, in a new map, it has expanded. Suppose now it takes large area has been covered by park. So what we can say expanded, expansion, become something when something become larger in size or area. So we can like you will observe in the previous map, it's small. The area it has covered clear, less area has been covered, but now it has extended clear. It is expanded. You can say enlarge, enlargement, extended, extension, widen, clear, grow, spread, developed. So this is the vocabulary you need for what? Always keep in mind कि आपके ग्राफ में आपके जितने भी ग्राफ्स है उसमें कुछ चीजें ऐसे होंगे कि वो एक्सटेंड होंगे. अब एक्सटेंड होने का मतलब क्या है? एक्सटेंड होने का मतलब यह है कि जो प्रीवियस ग्राफ है उसमें जो एरिया इट हैज कवर्ड दैट वाज स्मॉल एरिया बट नाउ इट इज एक्सपेंडेड. फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास एक सड़क है. This is my road, for example. This is my first map, and this road was only this much. Can you see? It was this much. But now, in the new map, they have extended it fully. Can you see? It is extended now. So if something has extended or enlarged, you do understand how it works. Suppose residential area was expanded considerably. Expanded considerably mean largely. The car park was enlarged. Like in later plane, in the second graph, in the second map, clear, it has enlarged. The road was extended. So make sure, clear, that when to use expand, I have written here the meaning. If you go through your book, clear, you understand how to use these verbs and nouns. The access road was widened. Industrial zone grew, clear, substantially. The town spread into countryside. Different verbs you can use. So we will need verbs for what? For expansion. Then you can have some of the verbs and nouns for reduction. अगर प्रीवियस मैप में हमारे पास कुछ था लेकिन उसमें एक्सटेंड हुआ है. सपोज आप यहां पे देखिए, दिस इज माई मैप एंड दिस इज अनदर मैप. पहले हमारे पास जो पार्क था, पार्क वो काफी बड़ा पार्क था, लेकिन नए मैप में हमारे पास क्या हुआ? कम हुआ, साइज कम हुआ. सो व्हाट वी कैन से रिड्यूस्ड, रिडक्शन, क्लियर, श्रिंक. सो ये 2000 का है एंड दिस इज फॉर 2026. सो बोथ ऑफ द मैप यू कैन से आपके पास मतलब एक चीज एक्सटेंड हो सकता है, आपके पास रिड्यूस भी हो सकता है. सो फॉर रिडक्शन वी कैन से नैरोड, कंट्रैक्ट, कट बैक, क्लियर, occupied, less space. So these verbs are needed for you. अब आपके पास another one that can be transformation and redevelopment verbs. The third one, look, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि there could be some of the verbs you need, clear, कि जहां पे extension हो. Another verbs you need for reduction. Another verbs you need for what? For transformation and redevelopment. For transformation, we can use transformed, redeveloped, modernize, reorganized, renovated, upgraded. Clear? So this is how like we can use the island was transformed into a tourist resort. So now transformed, it has transformed. So how it has been transformed? कि मतलब छोड़ पहले मतलब इतना ज्यादा वो मॉडर्नाइज नहीं था, अब काफी मॉडर्नाइज्ड हो चुका है. तो अगर उसमें you need some type of vocabulary words for transformation and redevelopment, so you can use these verbs and nouns. And then it comes about conversion and replacement. If there is any type of replacement, for example, in the previous graph, Seema, can you keep your mic mute, please? Okay, so here we have another one, conversion. Conversion का मतलब क्या है? I have got two maps. पहले मेरे पास यहाँ पे इस साइड पे for example hospital था. It's an hospital. But now here the hospital area has been converted into park. अब लेटर जो मेरे पास द सेकंड मैप है, तो सेकंड मैप में मेरे पास यहाँ पे पहले हॉस्पिटल था लेकिन इसमें मैंने कन्वर्ट कर दिया, रिप्लेस्ड कर दिया.
तो रिप्लेस किस चीज के साथ कर दिया? पार्क के साथ कर दिया. सो यू नीड सम ऑफ द वर्ब्स एंड नाउन्स फॉर रिप्लेसमेंट्स, कन्वर्जन के लिए. And then some of the verbs and nouns you will need for construction. So अगर नया कुछ एक construct हुआ है, so you can say built, constructed, clear, added, introduced, installed, ये इस्तेमाल कर सकते हैं. और वहां पे कुछ removal भी हो सकते हैं. If there is any type of removal, तो उसके लिए हमारे पास जो vocabulary इस्तेमाल होगा, so we can use remove, clear, demolished, knock down, pull down, cleared, cut down. So you need again vocabulary for this. And if there is no changes, suppose हमारे पास प्रीवियस मैप में भी एग्जैक्टली द सेम लोकेशन वी हैड पार्क, और सेम साइज भी है, सेम लोकेशन भी है. नॉर्थ में यहां पे हमारे पास पार्क था, यहां पर भी नॉर्थ में हमारे पास वही पार्क है. नो चेंज. सो फॉर नो चेंज यू कैन यूज दिस वोकैबुलरी देन. तो अभी हमने हमने जो चीज पढ़ा, दिस इज व्हाट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू शुड नो अबाउट दिस पार्ट. आपके पास पोजीशन के लिए मतलब वोकैबुलरी, कंस्ट्रक्शन, रिप्लेसमेंट, रिडक्शन, क्लियर, कन्वर्जन, नो चेंज. इसके लिए वोकैबुलरी आपको आपके पास होनी चाहिए, बिकॉज यू विल नीड दिस. क्लियर? हेलो? यस सर। Yes. ओके. यस ये सर। यस ये सर। आप लोगों ने मतलब ये चीजें आप लोगों ने याद रखने, बिकॉज अब ये कंप्लीटली चेंज है, बाकी से ये काफी चेंज है. हमारे पास लोकेशन है, एक्सपेंशन हमारे पास हो सकता है ना मैप में. एक्सपेंशन, रिडक्शन भी हो सकते हैं, कन्वर्जन भी, रिप्लेसमेंट भी, रिलोकेशन, नो चेंजेस. ये सारे मतलब जितने वोकैबुलरी ये आप लोगों ने याद रखना है, इस किताब में सब कुछ है. अब इसमें देखें कि बच्चे मतलब जिन बच्चों के कम बैंड आ रहे, एंड व्हाई डू दे गेट लेस बैंड? बिकॉज दे ट्राई टू यूज वीक वोकैबुलरी, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल वीक वोकैबुलरी. उसके लिए बेटर अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं? दीज आर द बेटर अल्टरनेटिव. फॉर एग्जाम्पल चेंज्ड, इट्स क्वाइट वीक. सो इंस्टेड ऑफ चेंज व्हाट इफ यू से वाज ट्रांसफॉर्म्ड, underwent clear redevelopment, got bigger. तो bigger हम ये नहीं इस्तेमाल कर सकते. We say expanded, was enlarged. Got smaller, shrank, was reduced in size. Moved, was relocated. We have became, was converted. Still there, remain unchanged. New thing, new facility, new development. आप खुद देखें, एक बच्चे ये words लिख लेते हैं, and there is another student who writes like this, in this way, who will get good band? Absolutely with the better alternatives. ये 5 band से above आप नहीं achieve कर सकते, but with this one you can achieve 8 plus. अच्छा, अब ये देखें. Okay, this is how, like, you need to understand, and you will use passive voice because yesterday we have studied the passive voice in yesterday's lecture. अब सब आप इसे रीड करें और आपको पता चलेगा कि मतलब these are the some of the examples. आपको यहां से अंदाजा हो रहा है कि मतलब we have used passive form. अब अगर हम इसमें देखें, examples ले लें, and for the examples we can use like model answer number 1. Can you see there are 2 maps? ये now है, अब ये है. This is now. ये अभी का मैप है. और द सेकेंड वन ये फ्यूचर के लिए. सो हेयर वी विल यूज प्रेजेंट टेंस, एंड फॉर द सेकेंड वी कैन यूज फ्यूचर. इसमें मॉडल आंसर है, आप लोग मतलब रीड कर सकते हैं. अब जैसे मैंने कहा कि एक प्रेजेंट में एक फ्यूचर में, अब इस पैराग्राफ को देखें. इफ यू जस्ट गो थ्रू दिस, सो वी हैव यूज्ड व्हिच टेंस? प्रेजेंट टेंस. क्लियर? प्रेजेंट टेंस वी हैव यूज्ड. इज लोकेटेड, लाइज. कैन यू सी? लेकिन दूसरे में देखिए फ्यूचर हमने लिखा है, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर पैसिव, फ्यूचर. वाई? बिकॉज इट्स इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर. इसमें देखिए, इसमें क्या है? बिफोर एंड आफ्टर. तो कौन सा हुआ? बिफोर एंड आफ्टर वी कैन यूज पास्ट एंड प्रेजेंट. अगर आप पैराग्राफ में आ जाए तो पास्ट में, सो द फर्स्ट पैराग्राफ इज इन द पास्ट. कैन यू सी?
Yes, sir. But the second one, it's on the clear? The future. Yeah. No, it's in the past and present, Oh, sorry. before and after. क्लियर? Yeah, लेकिन टाइम दिया नहीं है, नाउ के लिए नहीं, आफ्टर है. सो दोनों में हम किस चीज में लिख सकते हैं? पास्ट में. Why we can write in the past? Because it's not in the present. Both are in the past. Can you see? Before and after. after. Now नहीं है, otherwise we would have written present tense. अब इसका देखें, ये 1920 का है और दूसरा किस चीज का है? टुडे. तो हमने एक पास्ट में लिखना है और द सेकेंड वन वी नीड टू Yes. राइट इन द And प्रेजेंट. present. Present. यस. अब आप देखिए यहाँ पे क्या मतलब, दिस इज व्हाट यू हैव द वही 4 पैराग्राफ स्ट्रक्चर हमने फॉलो करना है. द मैप बिलो द मैप्स. तो मैप से शो public days when it first opened in 1920 and the park, the same park today. So what we can do, first of all, we will write down, we simply paraphrase the first part. तो paraphrase आप लोगों ने करना है. अब जैसे the maps compare the layout of Grange Park. This is Grange Park in 1920 with its current appearance. तो हमने कर दिया ना पैराफ्रेज. ये हमारे पास क्या हुआ? इंट्रोडक्शन. ओवरव्यू आप देखिए इसमें कि ओवरव्यू में हम क्या लिखना चाहते हैं. ओवरऑल, अगर हम ओवरऑल देखें, सो द पार्क हैज चेंज सब्सटेंशियली ओवर द पीरियड, becoming a more modern recreational space. Several traditional features such as the fountain, clear, जो बड़े बड़ी चीजें यहां पे हमने ऐड किए हुए. अब दोनों ग्राफ्स को आप देखें. लेट मी जूम इट आउट. इस पार्क को देखें. यहां पे हमारे पास ये प्रीवियस है. एम आई राइट? नाउ अब हमारे पास Yes, sir. ये इसमें है, दूसरे में नहीं है. अब इसमें अगर आप देख ले कि एंट्रेंस हमारे पास यहां पर भी है, यहां पर भी है. सो एंट्रेंस रिमेन द सेम. एम आई राइट? अब पहले वाले में Yes, हमारे sir. Yes, पास sir. फाउंटेन है, लेकिन इसमें हमारे फाउंटेन को कन्वर्ट किया हुआ है किस चीज में? रोज गार्डन. Rose Rose garden. garden. ठीक है. अब यहां पे देखिए कि हमारे पास पहले क्या था? रोज गार्डन यहां पे शॉर्ट था, एंड देन पॉन्ड फॉर वाटर प्लांट्स. Water plant. अब वो कैफे एंड चिल्ड्रंस प्ले एरिया में कन्वर्ट हुआ. और ग्लास हाउस को कन्वर्ट किया किस चीज में? वाटर फीचर में. Water feature. यस. अब इसमें देखिए हमारे पास अगर रोज गार्डन काफी ज्यादा थे, एम आई राइट? सो दे हैव रिड्यूस्ड. अब ये इसको इन Yes, लोगों ने इसमें कन्वर्ट कर दिया. सो some of the changes it has taken place. Clear? और हमारे पास दो टेंसेस होंगे, पहले में पास्ट एंड दूसरे में प्रेजेंट. अब present. इफ वी ट्राई टू टेक द ओवरव्यू पैराग्राफ, सो ओवरव्यू में हम कह सकते हैं कि ओवरऑल, अब दोनों को देखें. ओवरऑल द पार्क हैज चेंज सब्सटेंशियली ओवर द पीरियड. काफी ज्यादा चेंज हुआ है ना दोनों पार्क, दोनों में भी काफी चेंज. बिकमिंग अ मोर मॉडर्नाइज, ये दूसरा वाला देख काफी मॉडर्न हुआ है पहले से. सेवरल ट्रेडिशनल फीचर्स सच एज द फाउंटेन, ग्लास हाउस एंड पॉन्ड हैव बीन रिमूव्ड. अब देखिए इसमें पहले वाले में हमने ये, दूसरे वाले में ये रिमूव्ड है ना. फाउंटेन भी नहीं है, पॉन्ड फॉर वाटर प्लांट्स वो भी नहीं है. क्लियर? एंड ग्लास हाउस, ये Yes, तीनों चीजें इसमें नहीं है नए वाले में. They have removed. And while few new facilities for concerts, children and refreshment have been added. अब इसमें देखिए हमारे पास क्या क्या, कॉन्सर्ट भी ऐड हुआ, हाँ, चिल्ड्रन प्ले एरिया भी इसमें ऐड हुआ, और कैफे भी. पहले हमारे पास कैफे नहीं था, अभी कैफे भी है. However, the park remains in the same location between. अब देखिए दोनों मतलब सेम टू सेम लोकेशन है. द मेन एंट्रेंस आर स्टिल इन द सेंटर ऑफ बोथ रोड्स. तो इसमें अगर आप ओवरव्यू देखें, तो ओवरव्यू में हमारे पास जो बिग चेंजेस है, उस चेंजेस के बारे में हमने लिखना है कि फाउंटेन और ये स्टेज फॉर म्यूजिशियन एंड पॉन्ड हैज रिमूव्ड. क्लियर? और उसकी जगह हमारे पास क्या क्या चीजें आए? सो द बिग थिंग्स. एंड देन इफ देयर इज एनीथिंग दैट रिमेन चेंज, सो दीज आर द एंट्रेंसेस. अब इसके बाद हमने सबसे पहले एक मेन बॉडी पैराग्राफ पहले वाले पे लिखना है, 1921, and then we can write the second one on the later on today. अब 1920, the park had a relatively formal design. अब इसका डिजाइन देखिए, बिल्कुल फॉर्मल सा डिजाइन है, पुराना. There was a stage for musicians on the western side and a fountain in the center. अब ये वेस्ट साइड पे है कि नहीं? मैंने कहा था ना आप लोग के लोकेशन.
Yes, ये sir. हमारे पास क्या है, वेस्टर्न साइड पे. Stage. And Yes, sir. fountain in the center. Can you see fountain in the center? जो previous one है. तो fountain हमारे पास center में. And we have written like, फिर in addition a glass house occupied in the south east corner. अब यहां पे देखिए ये south east corner है कि नहीं? This one, water feature. Sorry, ये Southeast. glass Yes. house. Glass house. So can you see it's corner of southeast corner? Southeast. Yeah, so southeast corner is important. While a pond for water plants was situated in the northeast. Not अब here. यहाँ पे देखिए ये नॉर्थ ईस्ट पे है कि नहीं, जो पॉन्ड है, पॉन्ड फॉर वाटर प्लांट्स, नॉर्थ ईस्ट पे. And then Yes. we want to talk about there were also clear several rose gardens and seating areas around the park. अब इसमें देखिए हमारे पास रोज गार्डन्स और सीटिंग एरियाज आपको नजर आ रहे हैं. There's the rose gardens and seating areas. तो इसमें हमने क्या कहा कि दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर साउथ. ये वेस्ट है, Yes, ये sir. ईस्ट है, राइट. अब ये जो है, Exactly. ये हमारे पास नॉर्थ ईस्ट है, ये हमारे पास साउथ ईस्ट है, क्योंकि ये साउथ ईस्ट में, ये यहां पर है. ये हमारे पास वेस्ट साइड पे, और ये हमारे पास मिडल में है. इज दिस क्लियर? Yes. अब प्रेजेंट में देखें, सो इन प्रेजेंट इन टुडे मेनी ऑफ दीज ओरिजिनल फीचर्स हैव डिसअपीयर्ड. वो ओरिजिनल फीचर डिसअपीयर्ड. द स्टेज हैज been replaced by a large clear amphitheater for concerts on the western side. तो western side पे ये है, वही मतलब जो पहले म्यूजिशियन, स्टेज फॉर म्यूजिशियन था, अब ये Yes, इस sir. चीज के साथ रिप्लेस्ड हुआ. एंड डू यू थिंक लाइक जो वर्ड्स मैंने पहले दिए तो वही अल्फाज इस्तेमाल हो रहे, रिमूव्ड, enlarged, remain unchanged, extended, clear, shrink. तो ये काफी वर्ड्स थे हमारे पास. Similarly, the central fountain has been removed and a rose garden with surrounding seat has been created in the middle of the park. अब वो रिमूव हुआ था ना, फाउंटेन रिमूव हुआ, तो रोज गार्डन एंड सराउंडिंग सीटिंग एरियाज हैव बीन क्रिएटेड इन द सेंटर ऑफ द पार्क. Creative. फिर हमारे पास क्या है, ऑन ईस्टर्न साइड द पॉन्ड एंड ग्लास हाउस हैव मेड वे फॉर कैफे. तब ये देखिए कैफे उसके लिए बना कि नहीं, रोज गार्डन और पॉन्ड फॉर वाटर प्लांट्स. सो देयर इज अ कैफे एंड Yes. चिल्ड्रन प्ले एरिया हमारे पास बना. So this is how, like, you people, children play area and a water feature. Another notable addition is the entrance to an underwent car park in the south east. अब साउथ ईस्ट में देखे पार्क, कार पार्क आया कि नहीं, एंट्रेंस पे देखे. Yes, sir. या सो दीज आर द चेंजेस. तो मतलब इसमें पूरा लैंग्वेज है, लेकिन आप लोग को सिर्फ और सिर्फ इस चीज का ख्याल रखना है कि टेंस का ख्याल रखना है कि कौन कौन से टेंस में आप लोगों ने लिखना है. एंड अनदर पॉइंट इज अबाउट द वोकैबुलरी. This is the portion, like it was the most important vocabulary portion for this part. और tenses का आप लोगों ने ख्याल रखना है. And then you can use passives. Try to use more passives. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir.